السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بس الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ جل شانہ ہم نے اللہ کو مسلمان پیدا فرمائے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو مسلمان ہے. اللہ جل جلالہ کلمہ عطا فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمے کے مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں جائے. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. عزت اللہ کے خزانے میں ہے، ذلت اللہ کے خزانے میں ہے، وہ کامیابی اللہ کے خزانے میں ہے، ناکامی اللہ کے خزانے میں ہے. اگر سارے انسان اکٹھا ہو جائیں گے، اولینی آخرینی جنس ان سب کو اکٹھا ہو جائیں گے. ایک آدمی کو عزت دینا چاہتا ہے لیکن اللہ جل شانہ اس کے مقدر میں اس کی عزت نہیں لکھا ہے تو یہ سارے انسان جن جتنا لوگ ہیں اس کو عزت نہیں دے سکتا. ایسا اگر سارے انسان اکٹھا ہو جائے، اولینی آخرینی جنس ان سب کو اکٹھا ہو جائے گے، ایک انسان کو نقصان دینا چاہتا ہے لیکن اللہ جل شانہ نقصان اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو یہ سارے لوگ اس کو نقصان نہیں دے سکتا. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اللہ خالقنا، اللہ مالکنا، اللہ رازقنا. اللہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan beberapa ayat tadi, kemudian beliau ini tadi menyampaikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita ini orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah beri suatu yang sangat agung, suatu yang sangat berharga sekali, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang makna dari maksud daripada kalimat la ilaha illallah ini adalah kita mengeluarkan keyakinan makhluk dalam hati kita dan kita masukkan keyakinan ataupun kebesaran Allah, hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja yang kita masukkan dalam hati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memberikan kemuliaan, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, jika makhluk ini menjadi satu tujuan baik dari kalangan jin dan juga manusia untuk memberikan madarat kepada satu orang, namun Allah Subhanahu wa taala katakan tidak bisa, maka seluruh makhluk ini tidak akan mampu. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia dan jin ini tadi berkumpul menjadi satu untuk memberikan kemanfaatan kepada satu orang, namun Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan itu, maka mereka juga tidak akan bisa. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, manfaat, kemanfaatan dan kemudaratan semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam aturan Allah Subhanahu wa taala.
भाई दूसरा कुदरत वाले है, ताकत वाले है, अल्लाह जल सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह जल्ल शानुहु हमने अल्लाह को कलमा अता फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स ऐसे हाल में मरे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सच्चे दिल से शहादत देता हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी हदीस में कि अल्लाह जल्ल शानुहु उसको मग़फ़िरत फरमाएंगे। हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स 100 मरतबा ये कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, क़यामत के दिन ऐसे रोशन चेहरे उलट हो जाएंगे जैसे चौधी रात के चाँद होता है। उससे अफजल उस शख्स है जिसने ये कलमा ज़्यादा पढ़ा है। जो शख्स ये कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अमलनामे से गुनाह मिटते हैं, उसकी जगह निकी लिख जाते हैं। दूसरी हदीस में है कि क़यामत में अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाएंगे कि जहन्नम से हर उस शख्स को निकालो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो, इसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान हो। और उस शख्स को निकालो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो, या किसी मौका पर मुझे याद किया हो, या किसी मौका पर मुझसे डरा हो, ये सारे जहन्नम से निकाले जाएंगे। ये कलमे के बरकत से अल्लाह पाक ने हमारे ज़ुबान पर ये कलमा जारी किया है। इस पर जो शुक्र करना है, जितना शुक्र करे ये तुड़ाएगा। अगर सारी उम्र सुजदे में लगाएंगे इसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते जिसने कलमा अता फरमाया। Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang yang bersaksi ataupun mengucapkan dan menzikirkan kalimat la ilaha illallah telah disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya, barang siapa yang bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kemudian barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan untuknya. Barang siapa yang seseorang dia menzikirkan kalimat la ilaha illallah dalam satu hari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tempat kedudukan yang spesial untuknya di surga. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah daripada kalimat la ilaha illallah ini sangat banyak sekali, ya. Sehingga untuk mensyukuri Allah taala jadikan kita termasuk ahli, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan mengucapkan la ilaha illallah, mensyukuri nikmat ini dalam seluruh kehidupan kita, maka itu pun juga tidak akan bisa, jemaah sekalian. Saking betapa agungnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap persaksian atas la ilaha illallah terhadap diri kita ini. अल्लाह जल्ल शानुहु कुदरत वाला ताकत वाला ज़ात है। अल्लाह पाक ने हमारे ज़ुबान पर यह कलमा जारी किया है, जिसका कलमा है दुनिया भी है आखिरत भी है। भाई अल्लाह पाक ने कलमा हम पढ़ना है, अल्लाह के अहकामात हम पर फ़र्ज़ हो गया। अल्लाह के अहकामात में सबसे पहले हुक्म नमाज का है। नमाज अल्लाह के लेने का ज़रिया है। हदीस शरीफ में है कि नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। और क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज सही निकल आई तो बाकी अमाल भी सही उतरेंगे, अगर नमाज ख़राब निकलेंगे तो बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। क़यामत में इंसान को नमाज को दिखता है, अगर नमाज सही है तो बाकी अमाल में नरमी होता है, अगर नमाज में ख़राबी हो जाएंगे तो सारा अमाल भी ख़राब है। इसलिए भाई नमाज पर हम मेहनत करना है। नमाज अल्लाह से लेने ज़रिया, नमाज अफजल जिहाद है, वो नमाज मोमिन का नूर है। नमाज शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है। ये कायदा है कि जो दरवाज़ा खटखटाता है वो खुलता है। भाई अल्लाह पाक ने नमाज दिया है, नमाज के ज़रिए से जो काम हम करते हैं अल्लाह से मांगते हैं, नमाज के ज़रिए से मांगते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ है, मुसीबत है, वो सही तरीके से वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे, अल्लाह जल्ल शानुहु उसका तकलीफ़ ज़रूरत ख़त्म करेंगे। इसलिए नमाज भाई सही करना है। नमाज का फ़राइज़ जितना वाजिबात है हमको सब याद है, फिर उसको नमाज के लिए सही तरीके से पढ़ेंगे तो नमाज पर सब कुछ मिलता है। भाई Hadis rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah seseorang ini bersaksi atas kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah berjanji bahwa dia akan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan di antara perintah tersebut adalah menjalankan salat 5 waktu, ya. Dan salat 5 waktu ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala di samping kewajiban seorang hamba kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala juga tidak lupa memberikan pahala untuk orang yang menjalankan salat.
Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ini dan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya benar, maka seluruh amalnya Allah Subhanahu wa taala akan anggap benar. Namun jika salatnya itu salah, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Apabila seorang hamba ini dia mengalami kesulitan, kesusahan, ujian, kemudian dia berwudu, lalu salat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselesaikan masalahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalahnya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini menjadi perhatian buat kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. भाई हमारा नमाज सही हो जाएंगे, उसका आरा के रास्ते में निकल जाना है भाई। अल्लाह पाक ने तबलीग का काम दिया है। अल्लाह जल्ल कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून। अल्लाह जल्ल फरमाते कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये काम अल्लाह पाक ने दिया है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना, अच्छे बातें का हुक्म करना, बुरे बातों से माना करना, अल्लाह पर ईमान रखना। ये तबलीग का काम अल्लाह पाक ने दिया है, इस पर हम शुक्र करना है। ये ऐसे सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन लोग अम्बिया अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक ने ये काम अम्बिया अलैहिस्सलाम को दिया है। अल्लाह पाक ने हम पर रहम किया है, करम किया है कि अल्लाह पाक ने अम्बिया अलैहिस्सलाम काम दिया है। तबलीग का काम करेंगे, दुनिया में अल्लाह पाक चमकाएंगे, क़यामत में अल्लाह जल्ल शानुहु अम्बिया अलैहिस्सलाम के खशर हो जाएगा। भाई इसके लिए भाई हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे। अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे तो नमाज भी सीखेंगे, सब कुछ भी सीखेंगे। भाई अल्लाह के रास्ते में निकलना ज़रूरी है। हर इंसान को चाहिए कि 4 महीने लगाए भाई, इसके लिए सब इरादे करो भाई। Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan hakikat salat dengan betul dalam diri kita ini jamaah sekalian, maka kita perlu dakwahkan pentingnya salat ini. Dan dakwah ini juga sebagai tanggung jawab kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ya. Karena mereka ini termasuk dai-nya Allah Subhanahu wa taala, adalah dai-dainya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kalimahnya. Begitu juga tanggung jawab tersebut telah diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya ini tanggung jawab tersebut telah berpindah kepada pundak-pundak kita. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ini berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan salat kita ini menjadi salat yang bertambah baik, ya. Yang tadinya mungkin kita salatnya salat infiradi, salat munfarid di rumah, dengan dakwah salat jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kekuatan untuk berjamaah salat. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita dengan adanya tanggung jawab dakwah dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha Nabi ini perlu belajar, ya. Perlu kita belajar bagaimana agar kita ini dapat menyampaikan daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Maka oleh karena pentingnya perkara ini, pentingnya dakwah, menghidupkan agama, menghidupkan agar solat kita menjadi baik, zikir kita menjadi baik, tilawah kita menjadi baik, maka kita perlu usaha keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Semuanya siap insyaallah. tabligh हमारा काम है, सब करेंगे इंशाल्लाह. Jadi usaha mentabligkan agama ini adalah semuanya tugas kita. Rasulullah SAW sabdakan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah agama maka dengan walaupun 1 ayat. Jadi lafaz tabligh, ballighu anni itu masdarnya daripada tabligh ini tadi, balagha yuballighu tablighan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita ini semua adalah para penyampai, para penerus tugas baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita siap sediakan diri kita, waktu kita, ya, dan harta kita untuk mentabligkan ini agama. Semuanya siap insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.